तो सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिएंट। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी नीड टू कैलकुलेट वीसी ऑफ टी, राइट? This is the condition. This is 40 volt, 10 ohm, 4 millifarad, and at t equals to 0, switch is closed, 6 ohm. So first we need to calculate Vc of 0 minus, then we need to calculate Vc of infinity, then we need to calculate tau, right? This is the condition for t equals to 0 minus. So 0 पे switch is closed to 0 minus पे it would be opened. So diagram would be like this. So Vc of 0 minus we can write it directly as 40 volt. Hmm? Yeah, at t equals to infinity the switch is closed. तो अगेन जैसे थेवेनिन में निकालते हैं वैसे निकालना है. So A B Vc of infinity will get it, and tau would be equals to R equivalent into C. At t equals to 0 we need to consider to t equals to 0 switch is closed. So now in this case 6 and 10 and are in parallel because हमें देखना है across the capacitor. So both are in the opposite direction. So R equivalent is 6 parallel 10. See in this case कि तुम्हारी साइकिल कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ से के बाद रिपीट हो रही है, तो बेस लेंथ is 10. Okay, then you need to calculate VRMS. VRMS would be root, and then limit vary from, तुम्हारा इसका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, that limit vary from 0 to 5. तो ये इसका स्लोप की इक्वेशन निकलेगी, राइट? 0 to 5, then dt, then 5 to 10 as 5 dt. So slope equation that would be 0 0, directly they have provided. So this would be 5 comma 10, x comma y होता है ना, तो 5 minus 0, 10 minus 0, 5 by 10, 1 by 2 t. यही आ रही है. y2 minus y1, सॉरी, y2 minus y1 होता है ना, तो 10 by 5 तो 2t हो जाएगा. Now see, this is the MCQ, and in this they said current drawn from the source means I is how much? 8 plus J6. The circuit element impedance of Z1 means we need to calculate Z1. If you know the total current, this one is 5 ohm and J10 ohm and 200 volt. Remember I told you कि सबसे पहले अगर parallel circuit है तो तुम्हारे mind में क्या आना चाहिए? हर बार मैं बोलती हूँ current division rule. So we need to calculate basically I1, then only we can get Z1, right? So I1 is equals to, according to the current division rule, I into opposite impedance 5 plus J10 divided by 5 plus J10 plus Z1. अच्छा ये है नहीं ना इसमें, ठीक है तो कोई बात नहीं, Z1 नहीं है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वोल्टेज पता है हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज इज सेम बिकॉज इट्स इन पैरेलल. तो वोल्टेज पता है, इम्पीडेंस पता है, I2 वी कैन गेट इट. तो हमें पहले I2 से निकालना पड़ेगा. I2 पता है, I पता है, I1 आ जाएगा एंड देन Z1 आ जाएगा.